जो गांव में बड़े बूढ़े आते हैं तो ऐसे ही करते हुए आते हैं, राइट। बट मैं ऐसे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं बड़ा बूढ़ा हूँ, मेरा गला खराब है। ओके, सो दिस इज basically a social symbol. We have studied symbolism. So एक symbol होता है that whenever any elder is entering the house, so that elder just give an indication that I'm coming. Those who want to cover their faces, please do, right? And on the other hand, you see that the pile that women wear in their feet, right? That is an indicative that I am around. So please do not try to enter inside the house. That is another symbol. जो बेल रिंग्स होती हैं, जो पाँव में पहनती हैं, क्या बोलते हैं उनको, पायल, हाँ, एंकलेट्स, है ना। सो ये एक इंडिकेटिव है, ये एक सिंबल है, ठीक है। सो सिंबोलिज्म इज एवरीवेयर. नाउ बेसिकली टुडे आवर पर्पस इज टू स्टडी सिलेबस. एनीवन? सिलेबस कैरी नहीं करते आप लोग? वेरी गुड, दैट्स सो नाइस ऑफ यू पीपल. नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, मैं बिलीव ही नहीं करता इन चीज़ों में. आई डू बिलीव इन फिजिकल. ओके, सो वी हैव दिस यूनिट नंबर 8. Okay, the unit talks about fieldwork tradition. In anthropology. Fieldwork tradition in anthropology. Distinction between technique, method, and methodology. Technique, method, and methodology. Tools of data collection. Tools of data collection, that is observation, interview, schedules, questionnaire, case study, genealogy, life history, oral history, secondary sources of information, secondary sources of information, participatory methods, and analysis, interpretation, and
presentation of data, analysis, interpretation and presentation of data. Let's talk a little bit, let's just detail the syllabus, right? What the syllabus basically talks about. Field work tradition. So first, what is field? Field is the place where subjects live, right? Field is the habitat, right? Or you may simply say where subjects live. Who are the subjects? Subjects of study, जिनको हम स्टडी करने वाले वो कहाँ रहते हैं? That is your habitat, right? Field work, that simply means work in the field, field में काम, right? So field work. Next is fieldwork tradition. There is a difference between field work and fieldwork tradition in anthropology. Tradition क्या होता है? जो चला आ रहा हो, कभी शुरू हुआ होगा कोई ना कोई ट्रेडिशन. जैसे हम बोल देते ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, ये एक ट्रेडिशन है ना. तो ये ट्रेडिशन की शुरुआत तो कभी ना कभी हुई होगी. तो एंथ्रोपोलॉजी में ये ट्रेडिशन कब शुरू हुआ और कैसे चला आ रहा है, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ फील्ड वर्क ट्रेडिशन. यू अंडरस्टूड? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म फील्ड वर्क एंड व्हेन वी जस्ट अटैच दिस वर्ड फील्ड वर्क ट्रेडिशन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फील्ड वर्क इन एंथ्रोपोलॉजी. कि किसने शुरू किया सबसे पहले, कैसे कैसे डेवलप हुआ. जैसे इसको समझते हैं ऐसे, इन थ्योरीज वी हैव डिस्कस्ड L.H. Morgan. L.H. Morgan studied Iroquois Indians. Right? And he studied them in 1860s, 50s and 60s. Right? उसके बाद में अगर बात करें, then फ्रांस बोवास डायरेक्टली आ जाते हैं. He studied Eskimos. है ना? Then he basically directed the North Pacific expedition. हाँ. Then you may remember Torres Strait expedition was there, right? After that Malinowski scene पे आ जाते हैं. And this is the real beginning of fieldwork. So fieldwork कैसे कैसे शुरू हुआ, we'll be talking about that in fieldwork tradition in anthropology. Next topic will be the distinctions. हम fieldwork को सारे aspects को detail में करेंगे. That what is fieldwork, we'll write the definition. What are the characteristic features of fieldwork? Why do fieldwork? What is the function, मतलब why do we do fieldwork? What are the various factors that influences fieldwork? What is the ultimate purpose of field work? सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, right? So in that topic we'll be covering all those. Next is distinction between technique, method and methodology. Technique, method and methodology. What is the difference between the three? Anyone? Very good. That is what is indicative of logy, right? Very good. Ideology है. See, although the three terms that we are using here, we can use them interchangeably. ऐसा कोई distinction normally हम देखते नहीं है unless required by the examiner. Unless वो specify करे, हम तीनों को interchangeably use करते हैं. You look at your theories notes. Sometime I say research method. Sometime I might have said research methodology, research techniques. So interchangeably तीनों words use हो जाते हैं. But there are subtle difference in the three. Right? उसको कैसे समझते हैं? Methodology is the overall ideology of the research within which there can be various methods. ठीक है? Say
Ideology is that I want to write a ethnographic account. I want to write a ethnographic account. That is my overall thought कि मुझे ये करना है इस सोसाइटी के बारे में. So what will I start with? I will choose a fieldwork method. Within the fieldwork, I will do intense knowledge collection, information collection of the natives. For that, I will use different techniques. So एक methodology क्या थी मेरी? Overall ideology, overall thought कि मुझे करना क्या है. And within that, I have chosen the method accordingly. I may need one method, I may need a combination of methods. Within those methods, I will be needing some techniques of data collection or the tools of data collection. ठीक है? So this is how the three things are related. I will be discussing about them. First thing we will be doing this thing only. Then the tools of data collection, right? This is kind of techniques you may say. Observation. Observation simply means looking, systematic looking at things. Interview, you all know. Purposeful conversation is an interview. Schedule and questionnaire. So if you understand what is an interview and if you understand what is a questionnaire, you can then understand schedule. आपको व्हाट्सएप पे आते होंगे, प्लीज मेरे इसका फिल कर देना. क्वेश्चनर आते होंगे, आते हैं ना? देखा है कोई क्वेश्चनर किसी ने भेजा होगा कि ये डिटेल दे देना प्लीज, दैट विल हेल्प मी इन माय रिसर्च. क्वेश्चनर मतलब कि आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भेज दिया किसी को फॉर देयर रेफरेंस, राइट? कि आप इसमें फिल इन करके दे देना. व्हाट इफ आई एम अ रिसर्चर एंड आई एम सिटिंग विद द सेट ऑफ क्वेश्चंस माई सेल्फ and asking the question directly from him or from you people? That is a schedule. So that combines questionnaire and interview. What is the benefit of schedule? Questionnaire दिया, कितने लोग भरेंगे उसको? कितने questionnaires भर के भेजे आज तक वापस? एक भी नहीं. किसी ने भी नहीं भरा होगा पूरा questionnaire. तो most of the questionnaires carry more than 10 questions. And you happily answer the first two and then thought कि रहने देते हैं. जैसे जैसे वो टेक्निकल होता जाता है हमारा इच्छा उतनी ही खत्म होती जाती है. Isn't it? This is what happens. And especially if the questions are of the nature of the sex, sexual preferences पूछने लगे आपसे वो, suppose they ask you something very you can say private, will you answer? Suppose you answered that how many sexual partners you have. Suppose this is the question. Will any one of you or anyone in this Indian society answer that honestly? Unless that person is a, you can say, a very liberal person, or you can say very honest person. There are two conditions, na? So normally people try to hide it, isn't it? मान लिया कि such questions, so प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा, राइट? प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा. इसीलिए जितना सर्वे हुआ था कि हाउ मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स यू हैव, आई थिंक आई माइट हैव गिवन यू सम डेटा अबाउट दैट इन द चैप्टर ऑफ फैमिली, सेक्सुअल पार्टनर्स वाला. तो बेसिकली कोई बताता ही नहीं है ना कितने सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, राइट? इन वेस्ट यू मे फाइंड द डेटा इज more towards the higher side, but in India it is less towards that, right? The basic reason is people don't tell, right? It is very private. So questionnaire में लोग fill करके नहीं दे रहे हैं, right? But if I am taking the interview alongside, so people, suppose someone is hiding something, so I can just read it out. That can be the difference. So schedule basically combine qualitative plus quantitative method. ये क्वांटिटेटिव है प्राइमरली, ये क्वालिटेटिव मेथड है. इन दोनों को कंबाइन कर रहा है स्केड्यूल, राइट? वट एवर द लिमिटेशंस ऑफ दिस, इट इज ओवरकमिंग दैट. ओके. Case study is the intensive study of a case. What is a case? Case can be any phenomena, any accident, any happening, right? Say दिल्ली के अंदर रायट हुए थे, उसकी केस स्टडी हो सकती है,
राइट, पुलवामा के ऊपर अटैक हुआ था, उसकी केस स्टडी हो सकती है। जैसे कि आपने देखा था कि क्लिफोर्ड गीट्स वेंट टू वॉच दैट cockfight, so that is a case study of that case of cockfight, right? Genealogy. Genealogy is the family tree. It carries information about your ancestors. Genealogy is the family tree. How many you can say parents you know, मतलब grandparent, great grandparent, great great grandparent, how many of you know? And what great grandparent you know, all of you? Great great grandparent, nobody know? You know great great great, नहीं पता है। साउथ इंडिया में तो इट्स वेरी यू नो नेम्स आर मच बिगर, सो यू मस्ट बी नोइंग only three generation of, okay, that's good. So genealogy is basically the family history or a kind of family tree. Life history is the history of the life of an individual, right? It's a kind of biography, but biography normally historians लिखते हैं कि राजा महाराजा की लिखते हैं, राइट, वो हिस्टोरियंस लिखते हैं। बट हमारे लिए जो ज़्यादा डोमिनेंट इंसान है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, राइट? अब अगर कोई मान लिया कि से राहुल गांधी का लाइफ हिस्ट्री लिखे एंड देन दे मेक अ जनरलाइजेशन अबाउट इंडियन सोसाइटी, तो इट्स ए फ्लॉड अकाउंट ना, समझ रहे हो बात को? एक कॉमन इंसान का बायोग्राफी चाहिए हमें, सो दैट दैट पर्सन कैन बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन कल्चर। सो इन द विलेज स्टडी द मोर डोमिनेंट पर्सन्स आर नॉट सेलेक्टेड बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट फॉर द स्टडी, क्योंकि डोमिनेंट पर्सन को बाकी चीजें नहीं दिखेंगी ना, उसकी लाइफ में आधी सारी चीजें मिस आउट हो जाएंगी। सो मोर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन चाहिए। ओरल हिस्ट्री, सी ओरल हिस्ट्री मीन्स the history which is not written, and in the simple societies the history is oral in nature. Next, secondary sources of information. What is primary source of information? That is collected directly by the researcher. Secondary source include census, ठीक है? सेंसस रिसर्चर तो नहीं कर रहा है, राइट? सेंसस हो सकता है, यू कैन से दीज surveys, economic survey, etc., can be secondary sources of information. There can be tertiary source of information as well. What is tertiary source? Dear, you are coming after a week-long holiday. All well? All well? Okay. What is tertiary source of information? Anyone? सेकेंडरी डेटा कोई प्रोसेस कर लिया जाए तो इसके इंडाइसिस निकाल लें, उसके टेबल्स निकाल लें, वो टर्सरी, राइट? सेकेंडरी सोर्स जो है, सेंसस को आपने एनालाइज करके कुछ टेबल बना लिया, मतलब आपने ऑलरेडी कंक्लूजन्स बना लिया और आप डायरेक्ट उन कंक्लूजन्स को ले लेते हो, जैसे हम करते हैं, हम टर्सरी सोर्स यूज करते हैं। वट एवर वी आर डूइंग, वी से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ ग्राफिक, दिस इज द डेटा, तो वो हम एक तरह से कंक्लूजन निकाल के ले आते हैं। हम नॉर्मली टर्सरी डेटा ही लिखते हैं। देन पार्टिसिपेटरी मेथड्स, राइट? पार्टिसिपेटरी मेथड्स लाइक पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल और पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। ये पार्टिसिपेटरी मेथड क्या होते हैं? जब रिसर्चर और द विलेजर्स दोनों, और मतलब हिंदी वाला और, एंड मतलब, सो रिसर्चर एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोथ कम्स टुगेदर and they try to understand the local dynamics, social dynamics, political dynamics, economic dynamics, right, in order to find solutions for the local problems. ठीक है? So ये participatory methods है when both collaborate, the researcher and the subjects collaborate,
That is what participatory methods are. Next, how we can analyze, interpret and present the data that we have collected in the field. That is what it is, right? Okay, now let's start. Since we are talking about okay, so in this unit we are talking about the research methods. Mainly we will be discussing the research methods that are used in socio-cultural anthropology, research methods that are used in socio-cultural anthropology. ठीक है? What is research? Searching, that is already known. Novelty? But the word is research. Basically, research simply means seeking, systematically seeking, right? Knowing. It is derived from the word researche. That means seeking. What are the types of research? So mainly there are two types of research. Deductive research and the other type is inductive research. Okay. The deductive research, here we start with a generalization. And then we move towards the particular observations. Right? In case of inductive research, we do it reverse. We start with particular observations right? And then we seek generalizations. Is it clear? हम जनरल से पार्टिकुलर की तरफ जाते हैं इन डिडक्टिव रिसर्च. इन केस ऑफ इंडक्टिव रिसर्च दैट इज रिवर्स, पार्टिकुलर टू जनरल. समझ में आ गया? ओके. मेनली जो रिसर्च जो हम देखेंगे दैट इज डिडक्टिव रिसर्च. एग्जांपल्स ऑफ डिडक्टिव रिसर्च, एनीवन प्लीज डू टेल मी. एंथ्रोपोलॉजी में कौन कौन डिडक्टिव रिसर्च कर रहे थे? यस, इवोल्यूशनिस्ट. बोथ इवोल्यूशनिस्ट वर ब्रिटिश. डिफ्यूजनिस्ट, हाउ? वेरी गुड, वेरी गुड. डिफ्यूजनिस्ट. ओके. यहां पे हमारे पास एक ही मात्र स्कॉलर हैं जो कि ज्यादा इंडक्टिव प्योरिटी में बिलीव करते हैं.
He says that collect data from all places and theories will spontaneously emerge out of that data. You don't need to look for theories. Theories will spontaneously emerge out of the data. What you have to do, you just have to collect the data from all the cultures of the world before it is vanished. Before those cultures are vanished, you need to collect data. That was the idea of Franz Boas. Clear till now? Research? Okay. Now, what is the overall research process? See, normally हम इंडक्टिव रिसर्च की बात करते ही नहीं है, हम डिडक्टिव रिसर्च की बात करते हैं, राइट? सो डिडक्टिव रिसर्च की प्रोसेस क्या होता है? It is also known as hypothetico-deductive research. Hypothetico-deductive research. So what is the research design or the overall research process? क्या होता है normally? Very good. उससे पहले क्या हो रहा है? Question से पहले. Hypothesis मतलब question सी है ना, set of questions जो आपको prove करने वाले हो. वो टॉपिक कहाँ से आता है? आपका एक ओवरऑल आइडिया होता है जो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है. आपको एक ओवरऑल आइडिया होता है ना कि ऐसा हो रहा है. जैसे आपको लग रहा है अभी, जैसे आपको लगता है, जैसे मुझे लगता है कि दैट ऑल हिंदूज दे इमर्स द मोर्टल रिमेन्स ऑफ देयर डेड इनटू द रिवर वाटर. Right. This is a general idea, right? This is a general idea that I started with. Right? मेरे दिमाग में आया कि सभी लोग, इस हिंदू धर्म के लोग अस्थि विसर्जन करते हैं. You understand अस्थि विसर्जन? The immersion of the mortal remains of their dead. Right? Then I started looking for the literature that is available about that. What people say about that, right? So literature review. कि बाकी स्कॉलर्स क्या लिखते हैं इसके बारे में, ऐसा क्या क्या हो रहा है, राइट? देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी हाइपोथेसिस बिल्डिंग. राइट? हाइपोथेसिस में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि मैं क्या क्या रिसर्च करना चाह रहा हूं, राइट? इन दिस हाइपोथेसिस I will make a overall design, right, of, you can say, that will include what methodology I am taking, right, which methods I will be selecting, which techniques I will be using, right? Then using these methods, methodologies, techniques and tools, I will be doing what? Data collection. Isn't it? Then data analysis and interpretation, isn't it? Data analysis and interpretation
और फिर मैं वापस जाऊंगा अपने आप को, अपनी को रिव्यू करूंगा, और फिर वापस हो सकता है मुझे दोबारा करना पड़े सब कुछ, या फिर और कोई लोग कर सकते हैं मेरी थ्योरी को। हाँ, कंक्लूजन या एनालिसिस आ गया ना, इंटरप्रिटेशन हो गया। कंक्लूजन ही तो है ना, इंटरप्रेट कर लिया मैंने उसको। इंटरप्रेट करके क्या कहना चाह रहा हूँ कि व्हाट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, सो आई एम टेस्टिंग द हाइपोथेसिस हियर, राइट? यू मे राइट कंक्लूजन आल्सो इफ यू आर नॉट हैप्पी विद इंटरप्रिटेशन पार्ट, राइट? फिर वापस हम उसी प्रोसेस में बार बार जाएंगे। दिस इज व्हाट अ जनरल design of research. It's a circular process, it is not a linear process. It's a circular process. You understand the difference between circular process and the linear process? Linear process मतलब एक बार end हो गया. Research is a circular process. ये होता रहता है. ठीक है? Okay. So this is research. Now, what happens outside? You have this social reality. Right? On this social reality, the first thing that you will do is that you will apply your methodology. Okay? Within this methodology, arrows हमने गलत बना दिया. Within this methodology, there will be some methods, and within this there may be some techniques. Okay? So social reality is the, you can say, any village. Okay? My idea, my overall thought is that I want to do a descriptive study. That means ethnography. I think the air conditioners are off, all of them, na? Please don't do this atyachar on me. Because I'm burning a lot of calories, right? And in this walking and standing and speaking, so I'm sweating. ये वाला चलवा दो, हमारे दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, right? Okay. So ethnography is the methodology, right? Within this, what are the methods that I may use? While doing ethnography, I may choose field work as a method. I may also use historical method here, right? Field work as a method, right? What will be the main technique that I may be using? Participant observation. Is it clear? Say, my purpose is ethnology. Okay? So, what method will be using? Comparative method. Isn't it? Comparative method. And what techniques I will be using? Survey, right? Census. Census is also a type of survey. बस हमने नाम अलग दे दिया. Say my overall idea is historiography. So
which method I will be preferring? Historical method. Okay, and I may study numismatics, coins की study कर सकता हूँ, है ना? रोक, you can say, जो लिखे हुए थे petrographs, I may read them. I may search for the historical texts, isn't it? हाँ, so कुछ भी कर सकते हैं. You can say petrographs की study कर सकते हैं. Petrograph means rock addicts, right? Archaeological remains की study कर सकते हैं. So whatever techniques I will, petrograph समझ सकते हो? Petro means rock, graph means उस पे क्या picture बना हुआ है. हाँ? Hermeneutics is a different, you can say, thing. हाँ, बिल्कुल हो सकता है वो भी hermeneutics. ठीक है. वो आप रिलीजियस टेक्स्ट वाले को रिलीजियस टेक्स्ट में रखो, वो हिस्टोरिकल नहीं होता है एक्चुअली ना. हिस्ट्री इज अ डिफरेंट थिंग, है ना. उसको आप हिस्टोरिकल इवेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें आधी ज़्यादा चीज़ें कंजेक्चर्स होते हैं. रिलीजियस टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें ना डोट्स मिसिंग है. विल यू कंसिडर रामायण एज ए हिस्टोरिकल टेक्स्ट? तो इन द सेम वे यू कैन नॉट टेक दैट एज ए हिस्टोरिकल टेक्स्ट, राइट? सो नेवर एवर, दैट इज व्हाई आई एम वेरी केयरफुल व्हाइल आई एम राइटिंग एनीथिंग हियर, राइट? So I believe you have a decent clarity what do we mean by methodology, method and technique, right? Okay, we are using the term ethnography, ethnology. Yes, Vijender, what is the difference between ethnology and ethnography? देव सही कह रहा है ये? नहीं कह रहा सही? अच्छा, वो धीरे बोलते हो तुम यार, क्या कर रहे हो? धीरे बोल रहा है. यस, यू टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथनोलॉजी एंड एथनोग्राफी? ओके, सो अगर मैं आपको बोलूं कि एक कंपैरेटिव नोट लिख के लाओ कल, विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू राइट? एथनोग्राफी, this is one way of research. Mainly anthropology is ethnography, right? And second is ethnology. So ethnography, ethnos, that means people, that means culture. Isn't it? That may mean nation. And graphos means systematic description. So ethnography is the systematic description of culture. On the other hand, this is ethnos, that means the same thing that we had written here, plus logos. Logos means systematic or scientific study. Right? So ethnology is the systematic, or you may simply say comparative study of cultures. It is comparative study of cultures, right? You can take
the help of this example. Say this is culture 1, this is culture 2, this is culture 3, right? Any anthropologist will go to this culture, right, and may write ethnography 1. Ethnography 1 is the systematic description about the life of this culture, right? This will be carrying the information about their geography, that they are located in the tropical or in this area. It is carrying the information about their language. It will be carrying information about their race, their social organization, their economic organization, their political organization, their religion, their customs, values, जो भी है सब कुछ की डिस्क्रिप्शन रखेगा ये, right? This is similarly the E2, that is another description. Similarly E3 is another ethnography, right? So these three are ethnographies. Okay, these three are ethnographies. Now, any ALSI person like me, just sitting in their AC room, can choose these three ethnographies and will say, will look for the pattern, right? To give a generalization after cross-cultural comparison, right? That is ethnology. So ethnologist क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग कल्चर्स को, इन ए सेंस इथनोग्राफीज को कंपेयर कर रहे हो, है ना? इन ए सेंस दे आर कंपेयरिंग द कल्चर्स. व्हाट इज द पर्पज ऑफ एथनोलॉजी और दिस कंपेरिजन? टू गिव जनरलाइजेशंस. The purpose is to give generalizations. अगर हमें कोई थ्योरी ढूंढनी है, एक क्रॉस कल्चरल वैलिड नॉलेज ढूंढनी है, then we are going to compare different cultures. So say I observed that people in this culture 1 do polygamous marriage. I also say that polygamy is found in culture 2. I also say that polygamy is found in culture 3. So what I can say here, that polygamy is universal, right? This is a deductive research. This is a deductive research. I started with an assumption that ऐसा कुछ होता है. Then what I did this literature review. After that, I may have collected data from my own also, अपने questions बना के, and finally I come to the conclusion that ऐसा हो रहा है. So I gave a theory, right? After cross-cultural comparison. Clear? समझ में आई ये चीज? This is what we say. Okay. Now. Let's talk about these three terms in detail. ये आपको कल लिख के लाना है, आपकी बुकलेट में मैंने बना के दिया हुआ है. I believe somewhere I have given this, okay, it is given here on page number 103. Ethnology and ethnography. Once you guys write, I will be providing you model answer for this. पहले आपको लिखना पड़ेगा, तभी मैं मॉडल आंसर दूंगा. ठीक है? Those ALSI people who are running away from writings, please do write. ठीक है? Because one thing I can tell you about this exam,
It is only about doing things again and again. Smart people usually get out of the race. Smart people बचता है ना, ये कौन बार बार लिखेगा, यही तो चीज है, ऊपर तो लिखा था, कौन कॉपी करेगा बार बार. यूपीएससी डिमांड ही कॉपी करवाना है ना, उनको चाहिए ऐसा ही. इफेक्टिवली यू से दैट वी नीड स्मार्ट वर्क, बट एक्चुअल में आपको पता है कि बाबू काम करना है आपको, राइट. सो यू शुड नॉट shy away from doing the same thing again and again, right. Practice makes a man perfect, women also, right. So do right. हाँ, सबसे पहले methodology. The term methodology is derived from Latin methodologia, methodology is the analysis of principles of methods, comma rules and postulates employed by a discipline Simply put, it is the study or description of methods according to Mason Cooley, Cooley, Mason Cooley. Methodology is the applied ideology methodology is the applied ideology of the research. It provides overall contextual framework for the use of various methods right. It specifies various processes that are required to be followed do make this diagram now again. हाँ, again. कॉपी कर लिया, एसी चल गया, चलाना नहीं था, ये वाला बंद मत करना. For the class you must carry a sweater also, right. See, इसमें ऐसा कोई गलत थोड़ी ना है, you must carry it. एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा ना ये आपको दिखाने के लिए. अगर ये 10 मार्कर आता है तो आपको इसमें से एक या दो ही लाइन एग्जाम्पल के लिए जस्ट आई हैव रिटन दिस 3 थिंग्स बट यू मे राइट फॉर द एग्जाम्पल पर्पज एनी वन ऑफ दैम.
I suggest the first one. See, 10 marker question आ जाता है, people cannot write this properly. The more easy is the question, the tougher it is to write. है ना, ये easy लगता है देखने में, but क्या लिखोगे? 90% of students think that all the three are same. So क्या लिखेंगे उसमें? Done? Okay. The word method, second heading method. The word method is derived from Latin methodus, meaning way of teaching or going. It means pursuit or method of inquiry, method involves pursuit or method of inquiry, ठीक है, और scientific inquiry, INQR, inquiry, ठीक है. Method is a logical process, method involve logical process which may consist of a number of steps or techniques to accomplish something. Right? So it's a logical process. Method is a logical process consisting of number of steps to do something. Right? Okay. Do right. Method is orderly arrangement of the series of steps for the completion of a task. Right. Various methods used in anthropology. Involve comparative method, historical method, etc. Comparative method, historical method, etc. Technique. The word technique is derived from Greek technikos, it means a systematic procedure
For accomplishing a desired aim, huh, for accomplishing a desired aim, right? It is a particular way of doing something. Particular way of doing something. It is linked to proficiency, skillfulness, skillfulness, or easy handling of something, right? Examples of techniques can be interview, it can be surveys, participant observation, etc. ठीक है. Next, all the three terms described above can be used interchangeably but they have subtle differences when looked from a researcher's eye. Is it clear? रिसर्चर जब देखता है तो इसमें अलग अलग दिखता है. नेक्स्ट इज फील्ड वर्क. नो, पहले फील्ड वर्क से पहले मेथड्स के बारे में बात करते हैं. हिस्टोरिकल मेथड एंड कंपैरेटिव मेथड. सो फर्स्ट मेथड इज कंपैरेटिव मेथड. This is comparative method, right? So comparative method involves comparison of societies or cultures in order to derive generalizations. It involves comparison of societies and cultures right. Anthropologists use comparative method to develop theories right.
ये वर्ड यूज कर लेना यहाँ पे, हु use comparative methods to develop theories are called as I believe it is clear to you all people. जो लोग कंपैरेटिव मेथड यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एथनोलॉजिस्ट. कैन एथनोग्राफर बी एन एथनोलॉजिस्ट ऑल्सो? यस. Malinowski was an ethnographer as well as an ethnologist. Can we say so? Malinowski was an ethnographer as well as ethnologist. कैसे बोल सकते हो आप ये? He says that function सब जगह पे है. रिलीजन यही फंक्शन फुलफिल करेगा, मैजिक यही फंक्शन फुलफिल करेगा. तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि दिस इज आफ्टर क्रॉस कल्चरल रिसर्च. ठीक है, ओके. सो दिस इज कंपैरेटिव मेथड. ठीक है, एग्जांपल्स दोज हु यूज्ड classical evolutionists, used the comparative methods. Next, who used? You may say no, diffusionists did not use comparative method. उनका historical primarily. ठीक है. Class, हाँ? Very good, Brown. So functionalists, स्ट्रक्चरिज्म कर रहा है कंपैरिजन, बट वो इतने अच्छे से, क्योंकि उसने उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, वो प्रीमाइस पे चल रहा है. राइट. व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? देयर इज अ ह्यूमन रिसोर्स एरिया फाइल्स. राइट, ह्यूमन रिसोर्स एरिया फाइल. These carries the cross cultural comparison for the from the data across the world. It was compiled by G.P. Murdoch. So neo-evolutionists ने भी comparison किया, materialists ने भी comparison किया, right? हाँ, E.B. टाइलर, हाँ जी, हाँ इसने भी किया था, बिल्कुल. नो नो नो, सिंबॉलिक वालों को बिल्कुल कंपैरेटिव में मत लाना. Comparative method, is it clear to you all people? Okay. Next is historical method. Historical method involves reconstruction of the history of any culture. Okay, one thing I have missed, please be mindful. What are the criticisms? Of comparative method. What are the criticisms of? You remember Franz Boas' limitations of the comparative method in anthropology, and he says that comparison हो ही नहीं सकता. Two cultures cannot be compared against each other because every culture is unique. Right? So you write
the criticism, Franz Boas rejected the use of comparative method in anthropology as according to him cultures cannot be compared डैश करके लिख देना कल्चरल रिलेटिविज्म I believe you may be understanding what I'm trying to say. बिल्कुल कह सकते हो, डेविड स्नाइडर को भी डाल सकते हो. ओके, हिस्टोरिकल मेथड पे आ जाते हैं अब, सेकेंड पार्ट. सो हिस्टोरिकल मेथड इन्वॉल्व द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनी कल्चर, राइट. Historical method is interested in understanding the origin of any particular cultural trait and its spread. Right? So origin and spread में इंटरेस्टेड है, कहाँ ओरिजिनेट हुआ और कैसे कैसे स्प्रेड हुआ इन कोर्स ऑफ इट्स टाइम, राइट. सो दैट इज हाउ यू कैन रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर कल्चर. एग्जाम्पल्स, Franz Boas relied heavily on this, because Franz Boas says that every culture is product of its own unique history. Right? Its history and geo-environmental conditions. ठीक है, every culture is the product of. Similarly, diffuseness, right? Diffuseness also relied on the historical method, culture historical method. ठीक है. Then Evans Pritchard, according to Evans Pritchard, anthropology is historiography. Anthropology is historiography without understanding the history of any particular culture, we cannot understand
that culture. Without understanding the history of any particular culture, we cannot understand that culture fully. Right. Historical method in India was used by L.P. Vidyarthi, Dharni Sinha, K.S. Singh, Dharni Sinha, K.S. Singh, etc. K.S. सिंह ने पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में यूज किया इनको, इस मेथड को. राइट. What are the problems with the use of historical method? Do right. Dearth of reliable data. Dearth of reliable data. आपके पास historical record ही नहीं है, तो कैसे करोगे? Dearth of reliable data. Then problem of availability of records in public. Problem of availability of records in public. There may be inaccuracies in the time frames chosen by the researcher. Right. Now, these are two basic methods used by the anthropologists. Okay. Now, there is another method, that is field work method. You may have seen that. We'll discuss that in detail. नहीं डियर, नहीं. नॉट सिंक्रोनिक होना कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता ना. अगर सिंक्रोनिक नहीं है तो क्रिटिसिज्म कैसे होगा? सिंक्रोनिक कौन सी अच्छी चीज है? मतलब सिंक्रोनिक इज जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन दैट यू फाइंड सिंक्रोनिक इज गुड. व्हाट गुड इज इन सिंक्रोनिक? हाउ कैन यू इग्नोर योर पास्ट? है ना? Sometime I say that you must look at here itself, but without, see, we have had our background, right? We must cherish that. So do right. Field work. Method. Field. Number one, field. पहले field के बारे में लिखो. According to Herskowitz, I believe you remember M.J. Herskowitz. हाँ, M.J. Herskowitz. M.J. Herskowitz. Field is the ready-made laboratory for the researcher. Field is the ready-made laboratory of the researcher. Field work, according to Hortense Powdermaker. Hortense Powdermaker is a very famous researcher. She was trained by the Malinowski, right? Malinowski के साथ train हुई थी. Hortense Powdermaker, ये तो लिख ही लोगे, याद भी रहेगी. Hortense Powdermaker. Field work is the study of people. Field work is the study of the people and their culture
in their natural habitat, in their natural habitat. Fieldwork is the very essence, next paragraph में लिखो, fieldwork is the very essence and hallmark of anthropological research. Very essence and hallmark of anthropological research. That is why anthropology is termed as a field science. Anthropology is termed as a field science. According to Margaret Mead, we still have no way to make an anthropologist except by sending him in the field. Except by sending him into the field. Okay? What are the characteristics of field work? Number one, field work is the study of people in their natural habitat. Second, fieldwork involve prolonged stay of the researcher with the subjects, with the research subjects. Next, fieldwork involve employing various research tools such as observation, interview, case study, oral history, genealogy, etc. Next, through field work, the researcher attempts to understand the insider view of the native people, that is imponderabilia, of the social life. Imponderabilia, ponder नहीं किया जाए जो, imponderabilia of the social life. In bracket you will be writing Malinowski. Malinowski बोलता है कि इनका imponderabilia को स्टडी करना पर्पज है. ओके, यू आर लुकिंग दैट 8:30 हो गया है ना, बुक्स चला गया. ओके, ठंड लग रही है, सो व्हाई डोंट यू शिफ्ट, यू पीपल कैन शिफ्ट फ्रॉम देयर,
यू आर कंफर्टेबल देयर? कल से स्वेटर लेके आया करो, जिनको ठंड लगती है यू मस्ट कैरी एक्स्ट्रा लेयर, राइट? ओके, डन. Characteristic features. Okay, next, the objective of the field work. Number one, the main purpose of field work, according to Malinowski, is to grasp natives' point of view, comma, his relation to life, and to realize his vision of his world, right? According to him, the researcher should be able to understand the imponderabilia of the social life. Right. Next, according to Srivastav, the field work yields a lot of data about the lifestyles of the people and the meaning they attribute to their actions. फील्ड फर्दर इसी में लिखो, फील्ड वर्क also teaches the distinction between what people think comma, inverted comma में लिखना what people think, what people say, again inverted comma में रखते ना, comma, what people do and what people say they ought to have done. So what people think, what people say, what people do, and what people say they ought to have done. So distinction between these things we can just understand when we go to the field. Clear? जब फील्ड में जाओगे तभी तो पता लगेगा ना कि क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे और क्या कर रहे हैं. Give me the example for this. Which one? Yes, amicatic का distinction, right? So you may use the example of Marvin Harris, you may use the example of William Rathje, isn't it? William Rathje का example, so do right. Another,
Fieldwork allows the distinction between emic and etic perspective. In bracket, you may write Marvin Harris. Next. Next. Why do field work other than that? To write ethnographies. To write ethnographies. So to write. Objective क्या होता है? To write descriptive account about the cultures or ethnographies. To write the descriptive account or ethnographies. What else? To develop theories about human behavior. Isn't it? These are the objectives. Okay, now how to do field work? What are the steps? What are the basically, what is this process? What does this process involve? So field work as a process to write. So देखो फील्ड वर्कर करता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं फील्ड वर्कर फील्ड में जाता कैसे. सपोज आई टेक यू टू सेंटिनलीज एंड आई ड्रॉप यू देयर, right? That is certain that you won't be surviving this evening, isn't it? Because we are just going there to die, right? But suppose you understand their local tongue, you understand their local tongue, so you can say रुको रुको भाई. बट आप रुको बोलोगे तो इतनी देर में तो 2-3 एरो आ जाएगा, राइट? आप उनकी लैंग्वेज में बोलोगे तो शायद दे रेस्पॉन्ड, राइट? देयर इज ए chance that they will respond, right? So first thing will be what? Understand about their culture and language. So पहले पढ़ के जाओ, isn't it? बिना पढ़े जाओगे तो सपोज वो इसको yes बोलते हैं, do you want to die? Right? So this इसको वो बोलते हैं, मान ली इसको वो बोलते हैं नो और इसको बोलते हैं यस. सो देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस यू मस्ट अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग देयर, राइट? व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डिसलाइक, जितना हो सके आप पढ़ के जाओ. यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी फ्लुएंट इनफ इन देयर लैंग्वेज सो दैट यू कैन कम्युनिकेट विद देम. सो दीज आर द प्री कंडीशंस बिफोर गोइंग इनटू द फील्ड, राइट? सपोज उनको कोई चीज बुरी लगती है और आप वही चीज बोलते हो, है ना? आप अपने बिहेवियर को भी मॉड्यूलेट करके जाओ. ऐसा नहीं है कि आपको देखो कि कुछ कर रहे हैं वो ऐसे कुछ भी XYZ काम कर रहे हैं और यू स्टार्ट लाफिंग. यू कैन नॉट डू दैट, राइट? पता लगे थोड़ी देर बाद में वो ऑफेंड हो गए एंड दे थिंक लेट अस सेलिब्रेट, राइट? ओके, सो हाउ टू डू फील्ड वर्क प्रोसेस, राइट? सो नंबर 1, a researcher should have a decent understanding about the native culture and language before going to the field. बिफोर गोइंग टू द फील्ड मतलब वो फ्लुएंट होना चाहिए, बात करने के लायक होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 2 वर्ड आते हैं और बस जाके मैं यस और नो कर ही लूंगा, राइट? क्या पता कई बारी जैसे नेपोलियन शैगनन गया था यानोमामो में, एक टाइम तो उसे लगा था गया मैं, राइट? सो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सेकंड,
prolonged stay with the research subjects. अब जा रहे हो आप. Second is prolonged stay with the research subjects. Third, building rapport. building rapport, REPO मत लिख देना, रैपर्ट होता है, ठीक है, रैपर्ट. कहीं रैपो रेट लिख रहे हो, ठीक है. बिल्डिंग रैपो, गीट्स. आई बिलीव यू रिमेंबर द स्टोरी. रैपो बिल्डिंग कैसे हुआ था गीट्स का. सॉरी. सो कैसे हुआ था गीट्स का रैपो बिल्डिंग. पुलिस आ गई थी, बस उसी से रैपो बिल्डिंग हुआ था, राइट. बिफोर दैट उससे कोई बात करने को तैयार नहीं था, right? So that is rapport building. That means the cultural barrier that exists between the researcher and the subject, it is blown away. ठीक है. You remember the story, dear? What was the story? What was the ceremony? Cockfight. ठीक है. कॉक फाइट में पुलिस ने धप्पा कर दिया. यू अंडरस्टैंड धप्पा. व्हाट इज धप्पा. हाँ, धप्पा इज बेसिकली गेम इन नॉर्दर्न इंडिया, राइट. धप्पा मीन्स दैट, हाँ क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में. कोर्ट नहीं आएगा डियर. ठीक है, कुछ ना कुछ बोलते होंगे उसको भी, राइट. आई एम अनेबल टू फाइंड द राइट वर्ड हियर बिकॉज दैट यू नो उस वर्ड के साथ इमोशंस ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, राइट. ओके, सो सेकंड इज बिल्डिंग रैपो. नेक्स्ट, communicating with the locals. Communicating with the locals in their native tongue. Native tongue. Next, studying each and every, next point, studying each and every aspect of the society. डैश करके लिखो, इम्पोन्ड्रेबिलिया ऑफ द सोशल लाइफ, राइट. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटिंग ईच एंड एवरी डिटेल. in the field diary, comma, tape recorders, video cameras, etc. ठीक है. Who was the first one to take camera to the field? Margaret Mead, right? हाँ, Lewis took tape recorders, but Mead जो है वो कहती है कि okay, what is the scope of field work? Through field work, the anthropologists can study the cognizable as well as non-cognizable aspects of the culture. Cognizable aspects involve
cognizable aspects involve material culture, social structure, social organization, social groups, ये सारे कॉग्निजेबल है ना. जाके आप जैसे कोई बाहर से आता है, दे कैन मेक अ आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर वी आर हैविंग हियर इन दिस क्लास, राइट. Then non-cognizable aspects involve values, norms, myths, etc. of the society. Next, myths, norms, values. Next is applications of the field work. Number 1, theory building and discovering the laws of the society. Theory building and discovering the laws of the society. Second, policy making. Policy making, right? Policy making के लिए यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? Okay. For example, field work of Warrior Alvin, विद्यार्थी दुबे, SC दुबे, LP विद्यार्थी, right, etc. was used for policy making. Next is to counter ethnocentrism. Fieldwork can be used to counter ethnocentric beliefs. For example, before the study of Trobriandus by Malinowski, simple societies were considered as irrational, blinded by superstition. Irrational, blinded by superstition. It clear? That was the basic idea. So that have changed the perspective. Malinowski बोला नहीं वो इतने ही रेशनल है, आपको लगता है कि वो इरेशनल है. एक्चुअल में दे आर नॉट इरेशनल, rather they are fully rational people. They have their own logic. उनका लॉजिक किसी से inferior नहीं है, किसी के लॉजिक से भी. Is it clear? What was the logic he suggested for Trobriandus? हाँ, लोगों को लगता है कि why people are going too far just to exchange the two insignificant non-material goods, but it is fully rational system, right? So this is it for today. We'll be meeting tomorrow then, right? It's 9 o'clock because we have to start from now here. हाँ, एक और टॉपिक कर लेते हैं, छोटा सा ही है, 1 मिनट का है, वो तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग फील्ड वर्क. Number 1, topic of investigation. क्या इन्वेस्टिगेट करना है? टॉपिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट्स, राइट? द फील्ड वर्क.
राइट, कि आपको क्या इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द मैजिकल प्रैक्टिसेस, राइट, और यू वांट टू से देयर इज अ स्कॉलर Paul Stoller, right? Paul Stoller in, हाँ, he's an American anthropologist and he went to Sangay region in Niger to understand the sorcery practices, और खुद sorcerer बन गया, ठीक है, खुद ही sorcerer बन गया, ठीक है, Paul Stoller. Not just he became a sorcerer, he participated in an attack against other sorcerers. And one fine day he was attacked by a sorceress. Right? So he became basically उनको paralysis हो गया फिर. So he had to run away from there. Sorcery इतनी powerful होता है, आपको लगता है कि मैजिक कुछ नहीं होता, मैजिक होता है बिलीवर्स के लिए, सिर्फ जो बिलीव करते हैं सिर्फ उनके लिए होता है, नाइजर में. ओके, सेकंड इज द लोकेशन ऑफ फील्ड वर्क. थर्ड, लोकेशन ऑफ द फील्ड वर्क कैसे अफेक्ट करेगा? Yes. So you can say that how Boas comes to the idea of cultural relativism. So cultural relativism is an idea developed by Franz Boas when he went to Eskimos. That location inspired him to think that how these people are adapted to such a harsh condition, harsh environmental condition. So that is how the location also important, right? Next is sex and age of anthropologist. Sex and age of anthropologist. Malinowski could not study the women's dimension. That is what Annette Weiner is criticizing him. है ना? Then Cora Du Bois came to study the people, the tribe of Odisha, and she was, considered by the people as a spy. So बहुत सारे ऐसे issues है, right? Next, the funding source. भाई जो पैसा दे रहा है वो तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा ही ना कि मेरा काम करके आओ, right? Next, the technology used by the anthropologist. अब एक डायरी में लिख रहा है और एक टेप रिकॉर्डर चला के बैठा है या फिर वीडियो कैमरा चला के बैठा है, तो टेक्नोलॉजी विल naturally influence, right? Because say how much I can recall, suppose I'm talking to you, right, and the second thing I'm carrying a small camera here, I'm talking freely, my mind is not engaged that I have to remember each and every detail of this conversation, right? I can freely talk, so my mind is just extracting in the information and camera is doing the rest of the work, right? Okay, next is the ideology of the anthropologist also. Ideology of the anthropologist and questions guiding the research. Ideology and next one is questions guiding the research. So these are the following things that can influence the field work. So this is it for today. See you tomorrow. Right. You have to write the question, but question तो मैंने आंसर लिखवा ही दिया. Methodology, method and technique 10 marker. किसका?
इसके एथिकल इश्यूज की बात करें, क्रिटिसिज्म की नहीं करेंगे, एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट, विल टॉक अबाउट दैट. वी हैव नॉट इवन कवर्ड द फील्ड वर्क ट्रेडिशन येट. फील्ड वर्क अभी खत्म नहीं हुआ है. देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. मेथोडोलॉजी, मेथड एंड टेक्निक, 10 मार्कर. ठीक है.